हैं जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर अमरीका और ईरान के दरमियान, उनकी पहली नशिस्त ख़त्म तो हुई लेकिन अभी भी वो मुज़ाकरात जारी हैं। प्रोग्राम के पहले से में हम आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। उसके बाद 21 घंटे की जो तवील बैठक हुई उसमें क्या क्या हासिल किया है इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में भारतीय मीडिया की जगहसाई हर तरफ हो रही है, दुनिया का तमाम मीडिया एक तरफ, भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग एक तरफ। लेकिन आगाज करते हैं 1979 के बाद ईरान की बराह रास्त इतने हाई लेवल डेलीगेशन की इंटरेक्शन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुई। 21 घंटों तक ये नशिस्त जारी रही और उसमें मुख्तलिफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में बहुत सारी जो बातें हैं उन पर गौर व खौस किया गया। आपको एक झलक दिखाते हैं कल की इन मुलाकातों की। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात जिन्हें इस्लामाबाद टॉक्स कहा जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि ये अगले नशिस्त में आगे बढ़ के इस्लामाबाद अकॉर्ड के अंदर भी हों। लेकिन जब ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो किस नोट पे ख़त्म हुए, इससे बड़ी वाज़े तौर पे उम्मीद है कि ये बातें अब इधर से आगे जाएंगी। दुनिया गुज़श्ता चंद हफ्तों से जिस किस्म के अजाब से गुजर रही है उससे जो एक पॉज मिला है और बातचीत शुरू हुई है, इससे आगे लगता है कि इस सीज़ फायर को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के बाकी ममालिक को भी उतना कद अपने के मुताबिक काम करना होगा जितना पाकिस्तान ने किया है। लेकिन जाते हुए जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है वो जिस तरह से गुफ्तगू करके गए हैं, जिस टोन में गुफ्तगू करके गए हैं, उससे यही लगता है कि जो मुज़ाकरात है वो ना सिर्फ अभी आगे मजीद बढ़ेंगे लेकिन जाते जाते वो ये कह गए कि जो हमारी ऑप्शंस दिए हैं हमने ईरान को, जिस बात पे हमारी फिलहाल जो डेडलॉक है, इससे आगे हम उम्मीद करते हैं कि ईरान सोच समझ के हमें फिर जवाब देगा। मुलाहिजा कीजिए। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. जिस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर जो जबान का चुनाव है, आप देख सकते हैं कि इसमें हॉस्टिलिटी नजर नहीं आ रही। ये नजर आ रहा है कि जो 50 साल से ज्यादा का डिस्ट्रस्ट है उसको भी आगे बढ़ के उसके हील करने में बहुत वक्त लगेगा। ये रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन डेफिनेटली उस नशिस्त पे बैठे तमाम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट जरूर इंजॉय करते हैं, जो कि हमें जेडी वैंस साहब के बयान से लगा। अब वो ऑफर क्या दी गई है ईरान को, जाते जाते वो क्या कहकर गए हैं अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, मुलाहिजा कीजिए। We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. We see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly beat a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. उन्होंने कहा उम्मीद करते हैं कि हम ईरान की तरफ से ये कोशिश देखें कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, बल्कि यूरेनियम की अफजूदगी भी उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा और यूरेनियम जो है वो हैंड ओवर कर देगा इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं उनको। मुंजमद असासे जो हैं ईरान के, इस हवाले से क्या बात हुई इस नशिस्त पे? इस बात को कन्फर्म किया अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने कि हुई, लेकिन इस पर भी फिलहाल अग्रीमेंट नहीं हो सका। Talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up, but again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The President told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. एटमी जंग के दहाने पे जो खित्ता है उधर से लेकर मुज़ाकरात की टेबल में इस्लामाबाद तक लाने में पाकिस्तान के किरदार को किसी की अब तारीफ की जरूरत है नहीं, क्योंकि बड़ा वाज़ेह है दिन की रोशनी की तरह कि भाई यहाँ पर किस तरह का किरदार पाकिस्तानी हुकूमत ने निभाया है, पाकिस्तानी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने निभाया है। लेकिन फिर भी जाते जाते जेडी वैंस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का और ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल का शुक्रिया करके गए। Say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal.
پاکستان کی جانب سے کی گئی جو سنسیئر کوششیں ہیں ان کو ایران کی طرف سے بھی سراہا گیا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکی ریپرزینٹیو جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہیں انہوں نے جس طرح کی زبان کا استعمال کیا ڈپلومیٹکلی بڑی محتاط طریقے سے گفتگو کی, کوئی دھمکیاں نہیں ہیں, اس میں کوئی الٹیمیٹمز نہیں ہیں, آگے کے لائے عمل کی طرف وہ پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آگے سے کوئی جواب آئے گا یا کچھ فلیکسیبلٹی ہوگی. تو دوسری طرف ایرانی جو رجیم ہے ان کی طرف سے بھی جو رد عمل آیا ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ کے اندر کوئی زیادہ اگریسونیس نہیں ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ میں کئی ایشوز پر اتفاق رائے ہوا ہے, 2-3 پر اختلاف برقرار ہے جس کے باعث ڈیل نہ ہو سکی. ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک ملاقات میں ڈیل کی توقع نہیں کی جانی چاہیے. دونوں فریق کچھ معاملات پر اتفاق تک پہنچ گئے تھے, دیگر امور پر نقطہ نظر میں اختلاف موجود ہے. سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ قومی مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے. ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر کالبیاف نے کہا کہ ایرانی وفد نے مستقبل سے متعلق اقدامات کیے, مخالف فریق اس مرحلے میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں بالآخر ناکام رہا. مذاکرات سے پہلے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے پاس نیک نیتی ہے اور ارادہ ہے, لیکن گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات سے ہمیں مخالف فریق پر بھروسہ نہیں ہے. جے ڈی وینس کے ایران نے کی جو شرائط ہیں ان کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے جو بات چیت کی, اسے آگے بڑھ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جواد ظریف صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے. جے ڈی وینس کے ایران نے ہماری شرائط تسلیم نہیں کی, اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو سمجھنا ہوگا کہ ایران کو شرائط سے ڈکٹیٹ نہیں کرایا جا سکتا, اب بھی سمجھنے کے لیے یہ دیر نہیں ہوئی ہے. معاملہ ہے آبنائے ہرمز کا. اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھیں اس میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو دونوں فریقین ہیں ان کا شکریہ ادا کیا, بلکہ وہ تمام ممالک جنہوں نے انشور کیا کہ پاکستان کا ہاتھ مضبوط کیا جائے ان مذاکرات کو کروانے میں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں, ہر طرف سے تمام فریقین کو ساتھ بٹھانے میں, ان کا بھی شکریہ ادا کیا. Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. پروگرام کے پہلے سے میں سینیٹر مشاہد حسین سعید صاحب موجود ہیں, ماہر بین الاقوامی امور کے. اس کے علاوہ